सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Hello and Namaskar, very warm welcome to all the viewers in today's live and interactive session of Sahyog. As you all know that our Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan under the initiative of Ministry of Education for psychosocial support and mental well-being of viewers, students who are connected with us. My name is Rajan Rajput. Here we are joined by sign language interpreter Sonal. Sonal, warm welcome. And warm welcome to all the viewers in today's live and interactive session present by CIET-NCERT on channels 6 to 12, with their channel number 6 to channel number 12, and along with our official YouTube handle. These are NCERT official and NCERT PM with their class 6 to class 12 YouTube channels. In today's Sahyog session, we have another important topic. Topic for today is strategy to deal with mind masking. Mind masking is hiding for suppressing your true thoughts, feelings or personality to avoid conflict or protect yourself. What is exactly it is? We are know in today's session. If you have any queries and doubt regarding this topic, we have various medium to connect with us. First, note down Manodarpan counselor's number, that is also flashing on your screen, and number is 844-844-0632. You can also connect to our IVRS number, that is 8800-440-559. You can write us to on our email ID, and ID is sahyog.ncert@ciet.nic.in. If you are connected through our official YouTube handle, so live chat box option is there to drop your comment and queries. Without any further delay, we have our esteemed guest or panelists. Let's welcome them. Lieutenant Professor Rasmirekha Sethy, Associate Professor from RIE NCERT, Bhubaneswar. Ma'am, namaskar, warm welcome. साथ ही स्वागत करते हैं हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस शिवांगी सिंह का. मैम नमस्कार, वार्म वेलकम. नमस्कार मैम. So what do we mean by mind masking, and how does it show up in the behavior of students or young people? Ma'am Rasmirekha, please let us know. Thank you madam for your nice question. Actually mind masking, so it is very commonly we refer to as a mask, one kind of mask. चेहरा पे जो mask लगाते हैं और covering. So here mind masking, that means covering to the mind. So covering to the mind with thoughts, with the feelings, with the ideas or opinions, what actually should be spoken by the students. So really that will not be spoken. So that means really what to be spoken, it will not be spoken by the students. That means one kind of covering or masking in the mind, which is the act of it is one kind of what you have already said, that suppressing or concealing of one's own true feelings, true behavior, true emotions. So that means true emotions are not coming to the front. If one is speaking with mind masking, that means speaking from here to upward. So not with the feeling of heart or feeling with the heart. So it is one kind of what I said, that of covering in the mind in order to fit in with the social expectations or avoid the negative judgments. If people will think on me, if I'll be telling or responding incorrect response in the classroom, what the
teacher will feel towards me, what my fellow mates will be thinking. So what actually is real or student is real, that will not be reflected. So that means with the quoted form, with the concealing part, suppressing, so it can both conscious and unconscious, such as like intentionally one is doing. Sometimes what happens, unintentionally also they do behavior, that kind of hiding behaviors actually intentionally can come up, and with that unintentionally also that behavior comes. So making such kind of coping mechanism in challenging or supportive environments. So that means what I can say, negatively present something either by fear or by pressure of something else, or some kind of environmental pressure. So we can say that the students, when they'll tell lie, thinking that they are escaping from the situation, but they do not think that one lie can lead to more lies, isn't it? Right, The absolutely students right. may must to prevent themselves from being stigmatized, or to avoid like from bullying, criticism, or social exclusion. So in the setting with the institutional authority, or I can say that expectations, such as schools with the rigid behavioral forms also, that may be the causes. So like if the system is rigid and students or the children, they are not getting the scope to be spoken with the true self, so they will hide. Right, So it right. is not good actually. Then come to the next part, what is that? Reflection of the mind masking in the students behavior. Students who engage themselves in the mind masking, those who are very much habitual. Yes, students are very habitual. I cannot say that all the students, some students are there that are very much habitual, starting from the home background, and it is actually, it happens by the several factors. So when the students engage in mind masking, may appear withdrawn to Right, themselves, or absolutely right. feel alone, or unusually quit in the school setting, वो स्कूल भी छोड़ देते हैं. So when the students will not participate in the classroom activities or engage themselves in the class, they will not engage themselves, and they will not share even their feelings, their thoughts, and their opinions and ideas, or real emotions, because they fear towards the rejection, because they are in such a form unable to accept themselves, Right. unable to accept themselves. Yes, ma'am. So and also, if they will be thinking that if I will be misunderstood by my fellow mates, or by teachers, or by parents, so this kind of quoted behavior also I'll say. Right. So So- suppressed emotion can manifest as like stress, anxiety, fatigue, tension, and even sometimes burnout over the time. So it is very harder thing, and it is very hard and a very Herculean task on the part of a teacher to identify actually, to identify the genuineness Yes, ma'am. of the students in the learning parts, and or likewise when the teacher will identify, afterwards only the teacher will take the action. So that means the teacher will support, and as per the need of the students, if it will not be identified, so that is why better to show the real behavior, not Exactly, with the ma'am. Very mind masking. wonderfully you mentioned here the topic for today is mind masking, and what are the strategies to deal with mind masking. Ms. Shivangi, why do many students choose to hide their real feelings behind a mask of confidence or happiness sometime? Thank you so much, ma'am, for asking the question. Basically, students or anybody don't want to be judged by others. Sometimes they feel that it's better to pretend their behavior. और इसी वजह से क्या होता है कि वो अपने रियल इमोशंस को, रियल फीलिंग्स को छुपाने लगते हैं. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके कई सारे कारण होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस. सो फियर ऑफ बीइंग जज्ड,
बाय अदर्स इज लाइक एक प्रेशर बिल्ड होने लगता है बच्चों पे कि अगर वो पर्टिकुलर तरीके से बिहेव नहीं करते हैं तो शायद उन्हें सही तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं किया जाएगा या उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक जो बिहेवियर होता है बच्चों के अंदर, ये जो एक डर होता है, इस वजह से वो अपने रियल सेल्फ को ओपन अप नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये बिलीव होता है कि अगर वो अपने ट्रू इमोशंस को शो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि वो वीक हैं, वो उनका ये एक साइन ऑफ फेलियर है। तो वो एक प्रेशर में रहते हैं कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, हैप्पी दिखने के लिए ऑल द टाइम। क्योंकि मतलब इसका एक सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट इस पे कह सकते हैं कि होता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग जो है अपनी एक परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। हर वक्त कोई हैप्पी नहीं हो सकता, हर वक्त हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती है। बट स्टूडेंट्स को कई बार इस तरीके से ये जो एनवायरनमेंट जो उनके इर्द गिर्द रहता है, ये जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो उनके इर्द गिर्द रहता है, उसके वजह से वो एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और कह सकते हैं कि एक मास्क, जो वही मैम ने कहा था कि एक मास्क के साथ जीने लगते हैं। और मेंटल हेल्थ के मामले में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ को लेके ऑलरेडी बहुत सारा स्टिग्मा सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने जो जो नेगेटिव इमोशंस वो फील कर रहे हैं, जो वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, वो उन इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी उनका मेंटल हेल्थ होता है इस वजह से और बिगड़ता भी है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक सीवियरिटी मेंटल हेल्थ इश्यूज में को लेके डेवलप करती है बच्चों के अंदर। और इससे क्या होता है कि इससे उनका परफॉर्मेंस, उनके लाइफ स्टाइल में एक नेगेटिव चेंजेस आने लगते हैं और एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल भी कई बार बच्चे जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से बच्चे जो है माइंड मास्किंग या मेंटल हेल्थ मास्किंग जैसी या बिहेवियर मास्किंग जैसी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली हमें स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करना होगा कि कैसे बच्चे इससे बचें। यस मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमारे विषय को हमारे सभी व्यूअर्स तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस दैट समवन माइट मास्किंग एंड हाउ कैन टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स नोटिस इट अर्ली? सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू मैम, रश्मिरेखा मैम. So actually science, some science, actually I said that it is very difficult to identify still. In a long time, if the student is doing or acting such kind of behavior, so that means it will contribute to the mental health challenges. Actually, mental health challenges, as Shivangi already said, that mental health on it will create some kind of unhealthy situation, and such as anxiety, depression, and loss of self identity and all. So students who habitually mask may struggle with the self-esteem and struggle to form genuine relationship, and also real feeling or real feel actually isolated despite being surrounded by the peers. So some kind of signs they will be hiding, and they will not be they will not be open up, and they will create some kind of unhealthy situation, and they may be the disturbing element in the classroom, if you'll see from the classroom situation. And that is why we have to build such kind of inclusive classroom setup. The teachers have to create safe and supportive environments, build inclusive classrooms like where the students feel accepted. So that means the student is not accepting himself or herself. That is why one is creating some kind of problem for himself or herself. And stimming, like nail biting, and thinking, overthinking, and if I'll not be valued, I'll not be accepted. We have to create such kind of safe environment or supportive environment by which the student will be felt accepted. And sometimes alternate, like communication will not be proper. That is again another sign also. If the child is not communicating in a proper manner, so then social behavior also sometimes reflects.
and negatively behaving, and problematic child, problematic behavior. So, and also such kind of things can be identified by the parents. It is not only the role of the teachers, it is the role of the parents also. All such kind, and putting off into the mobile only. So like every time will be feeling alone, and someone is with the mobile most of the times, and feeling alone, and Right, ma'am. not mixing with others, and one has to in that time recognize and validate the feelings regularly. So check in with the students about their feelings and experiences, and that kind of experience or true experiences will also be will not be shared by the students, and both private and also in a group also. So in somewhat we can identify the signs and symbols like social interaction. They will not be socially intelligent. Right, ma'am. So if Yes. there will be socially intelligence, automatically the conversation and communication will be in a better form. So they will not be feel that flexible kind of situation is there. So whatever true self is there, so I have to expose it. So Right, they ma'am. will be Absolutely right. hiding. Most of the times they will be hiding. So that means if one is not like doing with the self advocacy or self acceptance, I have already said, and Yes, ma'am. at So every time definitely student has to hiding. see the strength and the weaknesses. So weaknesses, Right, and ma'am. accept the weaknesses, accept the strengths, what Exactly, ma'am. actually they have, and Definitely, hiding yourself is not a good option. Further, we are discussing strategy to deal with mind masking. So, Ms. Shivangi, how can students learn to be more authentic and express their real emotions in a healthy way? Okay, thank you, ma'am. I think start with the self-awareness. It's very important to notice how you're feeling. It's very important so that you can accept yourself, accept your feeling, because our emotions are valid, and student needs to understand that. बच्चों को ये समझना पड़ेगा, हमारे विद्यार्थियों को ये समझना पड़ेगा कि आप जैसा फील करते हैं, आपके इमोशंस वैलिड हैं, और अगर आप अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसी ना किसी अनहेल्दी फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ हेल्दी वे. अगर आपको रोना आता है, देन क्राई, देन एक्सप्रेस प्लीज कि क्या चल रहा है आपके साथ, आप क्या फील कर रहे हैं. आप अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ डिस्कस करें. एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इस मामले में गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड स्कूल्स आर डूइंग दैट. तो ये समझना पड़ेगा कि एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे वो आके अपने ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं. क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट तरीके के प्रेशर में होते हैं, चाहे वो अकेडमिक प्रेशर हो या किसी भी तरीके का प्रेशर. ग्रोइंग स्टेज में हर बच्चा ये फील करता है. सो बहुत ज़रूरी है उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो सेफ होके, सेफ फील करके अपने इमोशंस Yes. को एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर सके, और वो ये शेयर कर सके कि वो कैसा फील कर रहे हैं. जी. और मुझे लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत बार लोग उसे ओवर रिएक्शन की तरह देखते हैं और उन्हें जज करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. इसे हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है टू एक्सप्रेस आवर ट्रू इमोशंस इन अ हेल्दी वे. जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जैसे आप हैं वैसे अपने आप को दिखाएं, नहीं तो जिस दिन भी ये इमोशंस सबके सामने आएंगे, ये एक अच्छे तरीके से आएंगे, बुरे तरीके से सबके सामने आएंगे, ये फिर आप जज नहीं कर पाएंगे. सो टाइम टू टेक कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स. सो मैम रश्मिरेखा, योर वर्ड्स. So, with the conclusive statement, I can say that we can create the self as a very safe spaces for the students as well as for the children in the home, at the school place or institutional level, at the home level also. So we have to allow our children to be with their self only. So, and to engage in a very natural behaviors. So it is not like that unnatural behavior, and we have to foster some kind of culture, so by Right. which they can be
open up, and they will be using their open-ended questions to create such kind of very good environment where the child feels comfortable and sharing their true feelings and thoughts. So we have to encourage the regular Right. breaks or a rest after social or a high stress. So we have to support their interest. So it is not like that they are like it happens sometimes in the career, choosing of the career. So their Right, true ma'am. behavior and true wanting will be something, and with the parents pressure and all, yes, acceptance is there. So my parents are telling, so that means speaking something and hiding something. So we have to encourage our child to embrace their Yes, ma'am. unique interest and traits, and be proud of their what we Exactly, say. ma'am. Sometimes बिल्कुल. we use the word that is neurodivergent identity. So we have to advocate some kind of Right. changes. So work with the schools and clubs and other organization to make the environment very free and more Exactly, ma'am. inclusive also, and Really nice. educate to yourself. Children, educate to yourself. And sometimes we seek guidance, as a professional guidance also is required, and counseling something is required if the situation is very worst, and we have to consult with the professionals like the therapist or the counselors who specialize Yes, in ma'am. any emergency for Exactly, and attend. well said, ma'am. Practice for madam, practice for self care, practice for the self care, and Yes, ma'am. reflect on authentic self and accept yourself, and track one's own feelings also. And effective strategies to address mind masking in the students are very much vital for fostering all those kind of authenticity and Yes, ma'am. inclusion and well-being in educational environment, and creating psychologically safe spaces, and validating with the students feeling, and Exactly, empowering ma'am. self-value, what I have said already. So So it's yes, responsibility time of to the move for next concluding remark from Ms. Shivangi. Ma'am, your words very quickly. Ma'am, I just want to say, please be authentic, as ma'am said. Just be yourself. Talk to one trusted person whom you feel safe with, or express yourself in a healthy way. जी That's what I बिल्कुल, want to जो say. आप हैं वैसा ही आप अपने आप को सभी के समक्ष रखें। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमारे आज के टॉपिक को जस्टिफाई किया है। हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी टू डील विद माइंड मास्किंग। अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का करते हैं धन्यवाद। थैंक यू मैम, लेफ्टिनेंट प्रोफेसर रश्मिरेखा सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम RIE NCERT भुवनेश्वर। मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, नमस्कार। थैंक यू मिस शिवांगी सिंह, प्रैक्टिसिंग काउंसलर। मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। अपने इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई एम श्योर आप आज के सहयोग सेशन से सीख चुके होंगे हाउ टू डील, स्ट्रैटेजी टू डील विद माइंड मास्किंग। इस पूरे सत्र को हमारे साथ इंटरप्रेट कर रही हैं आप सोनल आपका भी धन्यवाद करते हैं, और साथ ही सेशन के इनके साथ आपको दिखाते हैं कल प्रसारित होने वाले सत्रों की एक झलक। सुबह का पहला सत्र 8 बजे 8 से 8:45 तक चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 तक योग शक्ति, बात होगी योगा फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर। 10 बजे का सत्र चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 तक आप देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिमुलेशन ऑन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। 11 बजे चैनल नंबर 14 पर उल्लास सत्र प्रस्तुत किया जाएगा। 12 बजे क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का टॉपिक लाएंगे फ्रॉम द रूलर्स टू रूल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। 2 बजे का सत्र क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का होगा, टॉपिक रहेगा द वाइस पैरट। 2:30 पर क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का विषय जानेंगे, शीर्षक है सुंदरिया भाग 2। 3 बजे का समय रहेगा क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए साइंस टॉपिक को जानने का, टॉपिक है नेचर ट्रेजर पार्ट 2। 3:30 पर क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का सत्र लेकर आएंगे प्राइम टाइम पार्ट 2। चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 तक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 से 5, जिसका विषय है वित्तीय साइबर अपराध की कार्यप्रणाली, डिजिटल गिरफ्तारी और ऑनलाइन निवेश ठगी को समझे। 5 बजे सहयोग सत्र, जहां कल एक बार फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे स्टूडेंट्स इन द डिजिटल एज, अटेंशन स्पैन एंड मेंटल हेल्थ। इन सभी टॉपिक्स को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। मैं सृजन राजपूत हूँ और मेरे साथ है सोनल। समय है कि हम दोनों ही आपसे अनुमति लें। नमस्कार।